Good morning, children. Today we will learn about the properties of the colloid. Now, colloid exhibits different properties. We will discuss one by one in detail. First is colloid is heterogeneous in nature. You are familiar the meaning of heterogeneous. Heterogeneous means colloid consists of two phases. One is dispersed phase and another is dispersion medium. So colloid is always heterogeneous in nature. Hetero means different, geneous means phases. So it is always heterogeneous in nature. It consists of two phases. One is dispersed phase and another is dispersion medium. What is dispersed phase? Whose particle size is from 1 nanometer to 1000 nanometer and it is present in a smaller amount. And dispersion medium is suitable medium which breaks the lump of the substance in the range of colloid. So this is a first property. Now second property is Brownian movement. What happens? The colloid are bigger in size. Then since the size of colloidal particle is bigger, then they collide with the particles of the medium. So since they collide with the medium particle, then different amount of force is developed on colloidal particle in different directions. So because of this different amount of force which is developed on colloidal particles due to their collision with the particles of the medium, then the colloidal particles show zigzag directionless motion. This zigzag directionless motion of the colloidal particle is called as Brownian movement because this movement was first of all noticed by Robert Brown in pollen grains in water. So what is the significance of this Brownian movement? Actually, this Brownian movement stabilizes the colloid. How? As we know, the size of colloidal particle is larger. Then when we keep the colloid for some times, then due to the action of the gravity, the colloidal particles start settling down. And because of this, if this takes place, then the colloidal particle that are settling, they stick together to make the precipitate and the colloid is destroyed. So because of this Brownian motion, this counterbalances the action of gravity on colloidal particles. So they keep on moving in the medium as they are continuously tossed by the medium particles, and this does not allow the colloidal particle to settle down. So this is the importance of Brownian movement, that it is responsible for stabilizing the colloid. Now third and very familiar property is Tyndall Effect. You have seen in class 9th कि अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाएं और वहाँ पर आप ले डाउन, आप सीधे ऊपर की तरफ मुँह करके लेट जाएं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो लाइट बीम्स, जो ब्रांचेस हैं, जो कैनोपी है, उसके बीच से जो लाइट बीम नीचे को आती है, तो जैसे जैसे नीचे आती है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एरोसॉल है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं और वहाँ पर एक कोन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है. ये आप एक डार्क रूम में अगर आप बैठ जाइए जहाँ पर कि रोशनदान से लाइट आ रही हो, तो लाइट तो रोशनदान से कमरे में आती है, लेकिन वहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे जैसे वो नीचे आती है वो कोन का शेप ले लेती है, बिकॉज द बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट present in the air. So this effect is called as Tyndall effect. So what happens if you
pass the beam of light through the true solution, then the path of light is not visible inside the true solution. But if you pass the beam of light through the colloid, then you notice that the colloidal particles are shining and one cone is formed and the beam of light is scattered. So this scattering of the beam of light by the colloidal particle is called as Tyndall effect, and the cone thus formed is called as Tyndall cone. So this is called as Tyndall effect. This is optical property of the colloid, that the path of light can be seen even inside the colloid. This is due to scattering of the beam of light by the colloidal particle, and the cone thus formed is called as Tyndall cone, and this effect is called as Tyndall effect. Now we will take filtration. As we know that pore size of the ordinary filter is larger, so the colloid can easily pass through ordinary filter paper, but the colloid cannot pass through the ultra filters. You have seen in purification of the colloid that the size of the pore size in the filter paper is reduced due to treatment with collodion, and then the colloid can be filtered, but colloid cannot be filtered by ordinary filter paper. Now the most important and very important question property of the colloid is electrophoresis. So this is also asked in board examinations short note. What is electrophoresis? As the name indicate, electrophoresis means movement of colloidal particle under the influence of electric field. So this movement of colloidal particle under the influence of electric field is called as electrophoresis. Now colloidal particles possess charge. As we know that if the colloid particles possess positive charge, then an equal amount of opposite charge, that is negative charge, is present in the medium. So now how it is known that colloidal particles are having charge? Then this colloid is put in U-shaped tube like this one, which is provided with the electrode which is charged at high potential. Now what happens here? We have the colloid in it. Now when the switch is on or potential difference is applied, then if suppose our colloid is positively charged, like ferric hydroxide salt, which is positively charged, so then the positive charge particles of the colloid will move towards negative electrode, towards cathode, and then this phenomenon is called as cataphoresis. Similarly, if our colloid is negatively charged, then the colloid particle move towards negative terminal, then it is called anaphoresis. And here in this case, the medium contains opposite ion, and these opposite ion move towards opposite electrode. For example, in cataphoresis, colloidal particle move towards negative electrode, towards cathode. So what counter ions are present in the medium? They move towards positive terminal. So this process is called electrophoresis. This electrophoresis shows that colloidal particles contain the charge. Now, how the charge is developed on colloidal particle? What is the way, or what is responsible for development of charge on the colloidal particle? So let us see how the charge is developed. What are the sources of the charge developing on the colloidal particle? So there are various chances, there are various ways by which the colloidal particle acquired the charge. We will discuss here few ways by which the colloidal particle acquired the charge. First one is frictional charge. ये colloidal particle के आपस में फ्रिक्शन के वजह से
हो सकता है। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने देखा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड में मेटल सॉल्स बनाते हैं, तो उस समय जो कोलाइड होता है इट में कैप्चर द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज। जो मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को बच्चों, वो है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन या एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं देन दे सेलेक्टिवली एडजॉर्ब the common ion present in the medium over them and acquire the charge। यहाँ कुछ इंस्टेंसेस हम लेंगे जो कि बोर्ड पेपर में भी 1 मार्क का पूछा जाता है कि व्हाट इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द कोलाइड इन ईच केस। हम यहाँ पर 2 केस ले रहे हैं, पहला केस ये है और दूसरा केस हमारा ये है। पहले केस में हम ये देख रहे हैं कि AgNO3 सॉल्यूशन को ट्यूब में लिया गया है और उसमें Ki सॉल्यूशन ऐड किया जा रहा है। इसमें कोई भी एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है उसमें Ki मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कोलाइड बनेगा उसका चार्ज क्या होगा। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जब Ki को AgNO3 में मिलाएंगे तो हम जैसा जानते हैं Ki सॉल्यूशन में K प्लस I माइनस होगा और AgNO3 सॉल्यूशन में क्या होगा Ag प्लस और नाइट्रेट आयन होगा। तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा AgI बनेगा जो कि इंसॉल्युबल होगा और साथ में KNO3 बनेगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही AgI बनेगा तो अब हम जानते हैं कि AgI तो डिजॉल्व नहीं होगा, ये जो AgI बनता है एक्चुअली ये कोलाइड रेंज में रहेगा क्योंकि मीडियम है अपने आप। अगर प्रेसिपिटेट AgI का भी बनता है तो उस AgI, ये जो AgI का प्रेसिपिटेट है ये जो कॉमन आयन मीडियम में है तो AgI का कॉमन आयन कौन सा हुआ सिल्वर आयन। तो ये सिल्वर आयन इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा और फिर अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो ब्रेक होकर के इस रेंज में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम Ki को AgNO3 में मिलाते हैं तो उस समय जो हमारा कोलाइड बनेगा क्या बनेगा सिल्वर आयोडाइड बनेगा और जिसके ऊपर जो मीडियम का कॉमन आयन है, जो मीडियम में कॉमन आयन है वो कॉमन आयन इस पर एडजॉर्ब हो जाएगा और ये एडजॉर्ब हो करके उसको चार्ज देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो चार्ज है कोलाइड पार्टिकल पर वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम सेकंड केस को फोकस करें तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, Ki मीडियम में है और इसमें AgNO3 सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है, कहीं एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, केवल इस तरह से बना हुआ है। तो अब आप ये जान लीजिएगा कि अगर एक्सेस कहीं नहीं लिखा हुआ है तो जो ट्यूब में लिया गया है